गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। On the Nalagarh Ridge, अब इसलिए क्या करना दुईटा कॉल में लड़ी करना और जिली जिले फोर्सला विन करना नालागढ़ फोर्ट में गए नालागढ़ में गए यानी कि जिल से कहाँ गया था नाहनतिर गया था और ऑक्टर नोले कहाँ गया था हम लोग देहरादून तक आया था। Meanwhile, Lieutenant Colonel Carpenter and Colonel Seibright Mowing were to demolish the Gorkha defense in Dehradun. यो दुईटा कर्नल ने टास्क दिया कर्नल कारपेंटर एंड कर्नल मॉडवेला भले कितने गए ना डिमोलिश करने हो खलंगा फोर्ट में करे जो ऑर्डर जिल किसी ने काबिड़ दियो हो द फोर्स कमांडर सहारनपुर 19 अक्टूबर 1814 सहारनपुर का सीन बताया जैसे कि क्या सीन थे सहारनपुर में 19 अक्टूबर 1814 में क्या सीन थे बनता। This old northern town served as the gateway for the northwestern invaders into Delhi time and again. ये gateway थी दिल्ली में अटैक करने के लिए सहारनपुर old days में hard trade hitters such as Central Asian Emperor Timur the Lame 1336-1405 and Emperor Nadir Shah in the 18th century had kicked dust here as they thundered through on their houses. यो विचार जरा भाई कि हाँ इसी बाटो आपके लोग दिल्ली में अटैक करने को लगे तैमूरलंग एंड तबायका नादिर शाह। On the usual day, Saharanpur buzzed with bazaars selling local products of basmati rice and mangoes. Bullock carts ambled on the dusty roads. Ambled को मतलब हुन्छ टहलना मतलब टहली जाते हो। On the dusty roads, carrying sugarcane, artisan, hunched कुबड़ो भैरव बोके गए जाते हो। Over their wood, carrying the travelers, exchange news and refresh themselves. यो सीन चल सहारनपुर को शहर को कहीं बासमती बेच रहा था, कहीं आम बेच रहा था, कहीं महंगे में लगा सामान बेच रहा था। यो सीन चल सहारनपुर को उस दिन को कत को दिन को 19 अक्टूबर 1814 को क्योंकि सहारनपुर जो थियो गेटवे थियो नॉर्थ इंडिया में अटैक करने पड़ा। अब अक्टूबर 1814 was an unusual day. बड़ा असंभव और दिन थे ये सहारनपुर आग लगे। सहारनपुर got as soldiers hostage. सहारनपुर got as soldiers मतलब गाँव सोल्जर्स तो वहाँ घुसी गए आएगा। Horses and guns, Major Gypsy division moved in from Meerut and assembled there. अब उस दिन में क्या हुआ 19 अक्टूबर 1814 के दिन में सहारनपुर में जनरल जिप्सी अपना गन अपना सोल्जर और लेकर कहाँ पहुँचे सहारनपुर में पहुँचे। Though the Britishers had taken the town in 1803, सहारनपुर ने 1803 ली सके थे लोग। It had never seen such convergence of forces before. लेकिन इससे पहले उन्होंने गाँव वाले देखा नहीं क्या हाल चाल समझ गया। There were about 4,400 fighting men. कति थे 4,400 fighting men थे जिप्सी के पास। With 900 Europeans. There were also 3,000 native sepoys, 138 pioneers, 200 guns lancers, ordnance driver, a regiment of native cavalry, a troop of skinners horses, along with 10,000 non-fighting public servants, 5,000 camp followers, and private servants for officers. इतनी मंजिल निकल चुके वहाँ सहारनपुर में। फिर दोबारा पढ़ो। Rohillas and Gujjar who overran Saharanpur were also recruited. This entire war horse was going to march almost 68 kilometers to the hills to fight Nepal army at Dehradun. ये सब मंशा कहाँ जाने हो 68 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ नहीं हो देहरादून में आया नेपाल आर्मी से लड़ने हो। Gillespie had arrived fresh from the command of the British occupation. बक्कर कमांड खत्म कर रहा है जिलिप्सी आको थियो कहाँ आते हो एट जावा नाउ इन इंडोनेशिया में कमांड कर रहे लड़ाई लड़ रहे जिलिप्सी बक्कर आको थियो। Having added more his reputation as rollicking roller उसमें नाम रखे थे rollicking roller
लड़ाई में नाम पाते हीरो नाम पाते लोग जावा में पाते कहाँ इंडोनेशिया में nickname he earned in British India Society. Of the advanced forces, Lieutenant Colonel Carpenter left for Dehradun. अब कारपेंटर ने क्या करे? लेफ्टिनेंट कर्नल कारपेंटर देहरादून के लिए निकले हो. Through the western Timli Pass and Colonel's Mauvay through the eastern Mohan Pass. एक टिमली पास में है, एक मोहन पास में है. दूसरा कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल कारपेंटर और दूसरा को आया मॉवे. एक आया टिमली पास में, एक अताटे आया. द वैली ऑफ देहरादून वॉज अंडर गोरखा कमांडर बलभद्र कंवर. हम लोग कमांड में थे, कसको कमांड में थे, बलभद्र कंवर को कमांड में देहरादून थे. द ब्रिटिश फोर्सेस हैड अराइव्ड मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमोगोइस प्रोपोर्शन. विशाल काय रूप में यति मान्छेले लेखन यो बुक गरेर यहाँ देहरादूनमा. और यो थाहा थिएन, बलभद्र थाहा थिएन यति मान्छे आएर मसँग लड्न आएछ भनेर. बलभद्र एस्टिमेटेड that they were inadequate to meet the British challenges on the ground. बलभद्रले सोच्यो भाइ त्यो मान्छेमा कसरी लड्नु, यति कति भोट सक्नु. आफ्नो मनमा एसेसमेन्ट गरे विचारहरूले. Decided to take defensive position from hills, Balbhadra made frantic preparation to fortify the outpost of Khalanga Hill above Nalapani. आप लोग जल्दी जल्दी डिफेंस बनाना शुरू करें. नालापानी खलंगा फोर्ट जल्दी जल्दी बनाना लगे. क्या करो विचार लेगा. Before the British arrival, he moved his forces of 600 people, including families, to Khalanga. अब ब्रिटिश आने पहला 600 सोल्जर और फैमिली के बच्चा लेकर खलंगा फोर्ट में आई तो आप बोलिए बचाव का लाके. The Gorkha had hardly a week. Gorkhas hardly had a week to build the ground outpost in a formidable fortress of bamboo stakes. गोरखा के पास टाइम थे बेचारा के पास. एक हफ्ता का टाइम थे अपना अपना ठीक ठाक करने लगे. क्या ले बनाने वाले फोर्टेस? बैम्बू को लगाए गए ना, मड स्टोन्स विद द क्राफ्टी टेक्निक ऑफ बोबी ट्रैप्स अंडर द एक्सपोर्ट जंगल वॉरफेयर टेक्निक्स. इसलिए क्या करें, बिल्डर लगाएगा ना, बोबी ट्रैप्स लगाना शुरू करे, वो बनाना शुरू करे, डिफेंस बनाना शुरू करे ना. द खलंगा फोर्ट वॉज ए फीबल डिफेंस. फीबल कमजोर. खलंगा फोर्ट में बहुत ही कमजोर डिफेंस थे अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश ऑफेंसिव. बहुत भयंकर ब्रिटिश ऑफेंस के सामने गोरखा का फोर्ट बहुत कमजोर थे, यहाँ बनना था. बट द परफॉर्मेंस ऑफ गोरखा, जो शब्द है सब लिए आपको सुनना पड़ता है. बट द परफॉर्मेंस ऑफ गोरखाज इन द बैटल प्रूव्ड देम टू बी स्मॉल इन माइट बट बिग इन फाइट. स्मॉल इन माइट, हम इस संख्या में कमजोर कमती थे लेकिन बिग इन फाइट, अभी लड़ने में मजबूत है. दिस इज द वर्ड कमिंग. हिस्ट्री में आना चाहिए ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. फिर दोबारा रिपीट कर चुके. द खलंगा फोर्ट वॉज फीबल डिफेंस अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश ऑफेंसिव बट द परफॉर्मेंस ऑफ गोरखाज इन द बैटल प्रूव्ड देम टू बी स्मॉल इन माइट बट बिग इन फाइट. ठूलो बात है, बहुत ठूलो बात है. Now, Balbhadra and Khalanga Fort, Nalapani, Dehradun. Captain Balbhadra Kanwar, the commander of the Gorkha at the Battle of Khalanga, was a young and proud Gorkha brave. Balbhadra एक young थियो, Captain Bab, proud थियो, young थियो, brave थियो. His father was Chandraveer Kanwar of Dhulikhel, who had been the governor of many important regions such as Garhwal and Doti in his career. इनको बाबा का नाम हो चंद्रवीर कंवर. धुलीकोट में रहने वाला ही हो और ये जैसे गवर्नर थे वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी में, चाहे गढ़वाल मोर्स, मोहम्मद डोटी मोर्स या नेपाल मोर्स. बलभद्र ग्रैंडफादर फ्रॉम द मेटेरियल, अपना आमा पट्टी बेटी, वॉज बाबा बड़ा काजी अमर सिंह थापा. अमर सिंह थापा उनको नाना हो. हुज ग्रैंड डॉटर अंबिका वॉज हिज मदर. इनका आमा का नाम हो अंबिका. अमर बहादुर क्या बोलते काजी अमर सिंह किशोरी का नाम हो अंबिका. इनको आमा हो अंबिका और नाना को हो बड़ा काजी अमर सिंह थापा. बलभद्र वॉज बॉर्न इन काठमांडू एंड हैड जॉइंड द गोरखा सेना अकॉर्डिंग टू फैमिली. उन्हें काठमांडू पैदा हुआ को
और उनले आफ्नो ट्रेडिसनलाई हामी ट्रेडिसनलाई जागृत राख्नुको लागि उनले आर्मी जोइन गरे अन द स्कर्ट अफ द यो मतलब बलभद्रको परिचय यहाँको मैले तपाईँलाई है अन द स्कर्ट अफ द भ्याली आउटस्कर्ट अफ द भ्याली टुवर्ड्स द नर्थ इस्ट on the outskirt of the valley of the Dhera towards the northeast ran a dry river called Nala Pani. इसको नॉर्थ ईस्ट में क्या थी, नॉर्थ वेस्ट में क्या थी, नाला पानी थी. 8 किलोमीटर इनटू थिक फॉरेस्टेड हिल्स. 8 किलोमीटर से यहाँ बैठी फॉरेस्ट जंगल, थिक जंगलों के साथ थी. Abundant with wild animals and populated by few isolated families. बहुत कम से मिलचा बसते हो नाला पानी में, बाकी सब वाइल्ड एनिमल्स में बहुत जाते हैं वहाँ. The highest hilltop had an outpost called खलंगा. जो हाईएस्ट टॉप थे वो खलंगा बनी जानते हैं. Named after old village by the name. किसी गांव का नाम थे कलंगा, उसका नाम इस गांव का नाम रखेगा, इस फोर्ट का नाम रखेगा. The western side of the खलंगा hillock plunged some 600 feet to the valley. जो वेस्टर्न साइड थी खलंगा को बिल्कुल 600 फीट गहरा. आज मैं देखी गए देख पाँच जब ने 600 फीट गहरा वहाँ मुझे वैली में गहरा था. द ईस्टर्न साइड फ्लोड आउट टू रिवर सॉन्ग. ईस्टर्न साइड सॉन्ग नदी तरफ मालदेव तरफ थे टू द रिवर सॉन्ग 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे थी वाले. द सदर्न साइड रीच द सदर्न एंड रीचेबल साइड फेस नालापानी विलेज. जो सदर्न साइड थियो जो नालापानी विलेज थियो और जहाँबाट आन सक्थेन, यता आन सक्थेन त आन सक्थेन. Balbhadra planned on taking a position of defense against the impending British onslaught and to keep prolonged the battle until they received reinforcement from Nepal. उसले भनेको लडाइँलाई म थामेर राख्छु, तबसम्म थामेर राख्छु जबसम्मको मतलब रिइन्फोर्समेन्ट आउँदैन नेपालदेखि. कम्ती मान्छे त्यति बिच छ यहाँ, कत्रो हजार मान्छे आइरहेको छ यहाँ. उसले आफ्नो भने म यो रोकेर राख्छु भने उसले दुश्मनलाई रोकेर राख्छु म, तबसम्म मलाई जब रिइन्फोर्समेन्ट आइज फिर कोही प्रब्लम छैन. The perimeter of the fort ran around in zigzag fashion on the convoluting को मतलब हुन्छ कुण्डलीदार, सामने कुण्डली भन्छ यस्तो सेकेन्ड डिफेन्स बनाएको थियो. शेप क्रिस क्रॉस वुडन स्टिक्स साउंडेड मन रैप. क्रिस क्रॉस थियो और वुडन स्टिक्स सरमाउंटेड बट रैम्पेट्स. बटले बनाएका वुडन लगाएर राखेको थियो, बनाएर आफ्नो फोर्टलाई बनाएर राखेको थियो, चारतर्फले यसो घेर राखेको थियो. बुझ्ने कोसिस गर्नु, ब्याम्बू लगायो, मिट्टी लगायो गरेर उसलाई बनाइराखेको थियो उनीहरूले बचाउको लागि. फर्मिङ एन इरेगुलर पॉलीगोनल शेप, अलग अलग शेप जस्तो भनेर एक स्क्वायर थिएन. क्रिस क्रॉस वुडन स्टिक्स surmounted bird ramparts forming 12 feet high double lined barriers filled with stones capable of taking a cannon beating for a fair amount of time. और उसको आगे 12 फीट कस्तो बनाएको थियो. त्यसले क्या गर्छ, किसी क्याननको फायर हान्छ या कोही हान्छ नि उनीहरू रोक्नको लागि क्यापेबल थियो, त्यति उनीहरूले बनाएर राखेको आफ्नो लागि. दे हैड अबाउट 8 कैनन्स. उनीहरूको पास 18 कैनन थियो, तोप थियो उनीहरूको 18 नहीं 8 सॉरी 8. of which 3 were mounted on through the wall. 3 टा वॉल में माउंटेड कराएका थियो. कति थियो टोटल? 6 थियो नि. 3 टा माउंट कराएका थियो माउंट उसमा. एट 3 टा माथि राखे. 5 of which 3 were mounted on walls. Gunpowder, other weapons and food supply were also stacked inside. Gunpowder भयो, खाना भयो, पानी भयो, सब कुछ फोल्ड गरेर राखेको थियो उनीहरूले. The Gorkha force was largely dependent on archers. मैक्सिमम उनको क्या थियो, कसमा भरोसा थियो, आफ्नो तीरवालासँग उनको विश्वास थियो उनीहरूलाई. Sword and खुकुरी फाइटर्स. Sword थियो उनको पास, खुकुरी थियो, आर्चर थियो, and तपाईँको यो cannon and rifles. There were a few obvious drawbacks faced by the Gorkhas. Obviously, उन पर drawbacks थी तो हथियार भी उनके पास. They were dependent on for water and reinforced from outside. पानी और reinforce भारी डालना पड़ते थे उन्हें, इसलिए वो dependent थे उनके पास अपने पास थी उनके पास. But the water source was well hidden
and only an informer could give it way. पानी को जो जगह थी बहुत लुक्याको जगह में थी और केवल उसने पता था जो था जिसको बारे में कैसे साथ पानी कहाँ चल टॉप सीक्रेट थे पानी की जगह हमने भन्छ त्यो माथि पानी थियो म बाद में बताऊँ कहाँ से पानी भेजना. There were only 300 fighters among their lot to meet the offensive of almost 500 of the enemy with all their weaponry and facility. You know, 5,000 बच्चा से लड़ने वाला केवल 300 बच्चे आते थे लड़ने वाले बच्चे बाकी बच्चा थे फैमिली थे. The Gorkhali strategy was based on Khukri, brave from within the fort to make sudden attacks. You know, sudden attack करते fort में डाई करना Khukri ने to incapacitate enemy progress. The British challenge lay in starving को भन्छ भूख से मारना बोले भले ब्रिटिशर्सहरूले तिनीहरूलाई भुक्का मार्नु उनीहरूलाई पानी नदिएर भुक्का मार्नु भन्छ. Of the Gorkha reinforced the group while finishing of the fort as soon as possible. और reinforcement लानको लागि बाटो रोक्नको लागि प्रोग्राम बनाए उनीहरूले तिनीहरू भुक्का मार्ने भित्र बाँकीलाई आम्दिने भनेर भन्छ. जस्तो अहिले इजरायलले गरेर छ वहाँ हमासमा बिल्कुल त्यही बात सम्झिनु अब. The Gorkhas were thinly spread outside and under limited resources inside. It is their credit they managed to hang on for almost a month from the first bombardment and inflicted serious damage on the British forces. इसको बावजूद पनि एक महीना तक लड़ाई खड़ा कर रखे और भयंकर कैजुअलिटी उनको थी इन्फ्लिक्ट करेगा उनको कैजुअलिटी करे ब्रिटिश आर्मी को. Gorkha were expert in laying traps as they have been practicing this art in trapping the wild animals like tiger, panther, cheetah, leopard, etc. to safeguard their domestic animals. Never near the cowshed in the forest, the trap was an unexpected great surprise and big setback for the attacking force. इनको ट्रैप जो था अटैकिंग फोर्स में बड़ा अचम्मा भी क्या कर दिया हम लोग फंसा दिया हमने बनने मतलब ट्रैप जो पहले शुरू में फंसा जो है हमास ने इस टाइम में बनाया फंसा रखा थी समझने की कोशिश करो. Mao's midnight warning. Colonel Mao will capture. It was on the morning of 21st October and Mao and his troops consisting of 1,000 men from the King's 53rd and the native cavalry along with 2 cavalry 6-pounder guns arrived at Dehradun. From Saharanpur, they marched through the Mon Pass, a difficult 5.5 km stretch of rocky dried riverbed or khud. The closest they got to Khalanga was the village Kudubulla Mohalla, Dehradun, where they set up a camp. Mao rode up 8 kilometers on the northeast direction to scout the Gorkha hold. अब बोले क्या करें घोड़ा बसेर मालजाल तरफ गए 8 किलोमीटर दूर देखे क्या हाल चाल से कसो देखने लगे रेकी करने लगे. At midnight on 21st October, with bold excitement, Colonel Mao sent a messenger to the Khalanga fort with a note to Balbhadra to surrender. 21 अक्टूबर को रात में चिट्ठी फटाया बलभद्र में तो सरेंडर कर दिया अपने जी जान चांसेस बनी. Balbhadra tore the note into pieces with the reply that he did not intend correspondence at such odd hours. After Balbhadra's rebuttal, Mao waited for Carpenter to arrive. On 23rd October, Carpenter and his troop of 1,320 300 horses and 5 light guns arrived at Dehradun to join Mao. अब बोले क्या कर ठीक है अब हम बुलाया मैं 23 तारीख को गए सब भाई. First assault 24 October 1914. 24 अक्टूबर 1814 में पहला अटैक हुआ है. At 4:30 a.m. on 24 October, Mao's men tucked 2 6-pounder uphill and began bombarding Khalanga fort. However, despite firing for many hours, many of the 6-pounder iron balls fell short of the fort and failed to breach the wall. This returned to camp by afternoon. बिहार उन्होंने शुरू करे बॉम्बार्डमेंट शुरू करो 24 पाउंडले हान्न शुरू करो गोला पुग्न सकेन वहाँसम्म कोही दीवार विकेट लाग्यो भाइ गिर्यो उनीहरू वापस गइगयो त्यही उस दिन आफ्टरनुन वापस गइयो. सरी मेरो मुकुटले पानी हाल्छ कि मलाई प्रब्लम छ बहुत ठुलो. On October 25,
जिलिप्सी वॉज विथ कार्पेंटर इन देहरादून. अब जिलिप्सी 25 अक्टूबर कार्पेंटर from देहरादून मानचर. When he was informed that Mauvais had failed in taking over Khalanga Fort, assuming उन्हें देखे कि जिलिप्सी आया, Mauvais ने खलंगा फोर्ट लिया कि नहीं समझो, जिलिप्सी आया वहाँ, assuming that मैं सोची रहा थी, Mauvais would have been done his job by now. उस समझो Mauvais कर सकेगा काम मदद जो अब देखिए जन सवाल. जिलिप्सी was preparing to reach Sirmaur. उस समझो 1 नवंबर वाला जिलिप्सी पकड़ कहाँ पहुँचे? सिरमौर में पकड़े थे. और यहाँ से आपका बासु यहाँ पुगे हो. हाँ सॉरी यहाँ पुगे 25 अक्टूबर को. ठीक है. और 25 नवंबर में नहीं था. अब नवंबर आएगा सर. नवंबर आएगा. नवंबर 25 नवंबर में पुगे. 25 अक्टूबर सॉरी 25 अक्टूबर इधर पकड़े थे 1 नवंबर वहाँ वहाँ थी. सॉरी अरे यहाँ करना पड़ जाएगी. Would have done his job by now. Jilepsy was preparing to reach Sirmaur by 1 November. He was very annoyed with Mauvais. बहुत नाराज हुए सिंह. जिसको नॉर्मल हिंदी से फौज में फेलियर एट द सरमाउंटेबल. जो सारे जीतने लायक वो जगह थी सरमाउंटेबल को मतलब जीतने लायक जगह. जो जीतने लायक जगह थी तिल तो हार बसे थी मोरो मेरो कार्डल तक तो बहुत रिसाया हूँ. क्या हो इसको बनना तो सही नहीं जीतता बनना. बहुत रिसाया. Jilepsy ordered his army to march to Dehradun into 2 brass 12-pounders, 2 6-pounders, hodgers and mortar meeting with the Mauvais Dehradun. उन्हें ऑर्डर करते साला बाढ़ में जाए मजाला सिरमौर वहीं लड़ते मतलब. नाउ ही ऑर्डर क्या ऑर्डर कर रहे विद द हाँ surmounted distance of Gorkha force with the change of plan. जिलिप्सी चेंज कर दूसरे प्लान अब कहीं ना सिर्फ वो क्या करोगे. जिलिप्सी ऑर्डर हिज आर्मी टू मार्च टू देहरादून विद 2 brass 12-pounder, 12 brass 12-pounder, 2 6-pounder, hodges and mortars meeting up with the Mauvais Dehradun on the morning of 26 October. 26 अक्टूबर बने तो यहाँ बैठला से बाहर बनने वाले होंगे हमारे सामान निकलना. The next day he scouted fort and optimistically wrote to Major General Grant Caldwell. Major General Grant अब तो बहुत सारा पुलिस चिट्ठी लिखी हुई है. The fort stands on the summit on the almost inescapable mountain and covered with an impenetrable jungle. The only approach commanded and steepy stockyard. It will be tough job to take it, but by first proximity, I think I shall have as some auxilio. अब सब auxilio मतलब तत्वाधान को तत्वाधान खुशी के दिन में जीती आला हो पहले टाइम में जीतू बना दिले. The Gorkha made the Masan hidden place and all along the stockade मतलब सड़क गुरेटो थी गुरेटो तो गुरेटो को तल तल ने मचान बनाते. And traps were laid at down below the मचान. मचान तो ट्रैप बनाते हैं माथे में वो मचान में सारा ट्रैप बनाते हुए. स्टॉकेट मतलब जो बाटो गुरेटो. अब यो सब पोजिशन वहाँ को लड़ाई को मैंने बताया था पहले कि कष्टो थे वहाँ बनना क्या थे जिलिप्सी से क्या बने बन रहे. सेकेंड असॉल्ट 31 अक्टूबर 1814. अब 31 अक्टूबर 1814 में सेकेंड अटैक हुआ. जिलिप्सी वाज अप बाय 5 AM 5 बजे घंटे उठी गई उससे तेरा. The oaths of Nalapani woke up to firing on the Khalanga fort. वहाँ पर जंगल बोला साहब बड़ा बड़ा फायर में कहाँ क्या तो अच्छा भाई नालापानी वालों में. For an hour and a half, cannonballs flew in the air, but mainly fell short of hot target. मतलब गोला फायर हुए टारगेट में लाइक दाएं बाएं गिरे. The few fire shots had hit, but did little damage. कुछ गोला गिरे वहाँ लेकिन के नुकसान कर रहे हैं. By 8 PM to everyone, concentration को मतलब आतंक संग्राम या हॉरर आतंक जिसको भाई वहाँ एवरीवन आतंक को लगे. जिलिप्सी मेड अ सरप्राइज डिसीजन. अब डिसीजन अपने सरप्राइज चेंज करते डिसीजन लावले झक्की बनची होते ना तिले. ही ऑर्डर्ड द कंबाइंड अटॅक
सिग्नल कर दियो, फायर कर दियो, कम्बाइन्ड अट्याक करो भनेर, विच वाज प्लान फर लेटर 10 AM। जो प्लान गरेर 10 बजेको उसले 8 बजे मासाले गला भनेर, भेरी राइट सिग्नल हुन्छ। फर्स्ट दिन्छु होला, एक लाइट फायर गरिदियो, धोइ धुवा हुन्छ, लाइट जल्छ, थाहा पाइदिन्छ अब हाम्रो लडाइँ लड्ने भनेर। त्यो टाइममा थियो, अहिले पनि त्यही सिस्टम अहिले पनि छ। उसले 10 बजेको टाइम दिएको थियो, उसले 8 बजे फायर गरिदियो। The 2 hours bombardment caused costly confusion amidst the din of the battle। लड़ाईको दौरानमा 2 घण्टामा जो गडबड गर्यो त्यसले सारा खेल खराब गरिदियो उसको। His supporting column did not hear the signal। जो सपोर्टिङ आर्मले जो लड्न आउँथ्यो 10 बजे उसले देखेदेखि त सर्ट देख्यो, उसको आवाज सुन्यो। दिनमा सर्ट देखिन, लाइट देखिन, अनि उसको आवाज आयो बडाङ बडाङ, गन फायरले थाहै पाएन क्याबो क्याबो भनेर, सपोर्टिङ आर्मले थाहै पाएन क्याबो भनेर। Column did not hear the signal shot। The perfectly laid out battle plan began going very and confusion। जो बढ़िया प्लान में लड़ाई लड्नको लागि वो तो भएको खत्म भएको छ, सब झोल भएको छ, बर्बाद भएको छ। अब क्या हुन्छ? Around 8:45 AM, Gillespie ordered Carpenter and Major Ludo to chase a group of Gurkhas who had been waiting overnight outside the fort। इसले कला भने जिलिप्सीले कार्पेन्टर, क्याप्टन कार्पेन्टर एन्ड मेजर लिडोले भने यो गोर्खाली बाहिर बसेर छ, खडा भएर बसेर छ फोर्टको बाहिर, यिनीहरूलाई चेस गरेर फका चलाउन मारेर भनेर उसले अर्डर दियो। जो कि रातभरि बसेर इन्तजार गरेर बसेको थियो गोर्खालीहरू, आफ्नो गनसन लिएर जो पनि लिएर बसेको थियो, उसले भगाल्न भने। As the retreating Gurkhas reached some huts close to fort, more emerged from the fort with kukris and shield। जसरी झोपडी के अंदर घुसिएर गोर्खालीहरू हट्यो वहाँदेखि, उनको फायर आने लाग्यो। झोपडी पास गएर अरू गोर्खाली बाहिर बाहिर निक्लियो। अब अरू जग्गा मान्छे बाहिर निक्लियो बाटे, जति बसेको थियो त्यो त्यही थियो, अब अरू पनि बाहिर आयो। शाउटिङ द ब्याटल क्राई आयो गोर्खाली, अब झोकेमा अब झोकमा आइगयो सबै। इन द ह्यान्ड टु ह्यान्ड फाइट that ensued, 58 of the British dragons were killed or wounded। त्यो लडाइँमा 58 ड्रैगन फोर्सेस जो ब्रिटिश आर्मीको फोर्सेस थियो त्यसले ठ्याम्मै मारिदियो, मारि पनि थियो, घाइते पनि गरिदियो। Therefore, thereafter, the Gurkhas climbed back into their fort and aggressively chased the progress of British। अब फोर्ट में चढ़कर हट भगाए होला हटी जो आइरहेको थियो लड्नको लागि। Act on by Lieutenant Ellis, the British pioneer moved forward to install ladder on the fort। अब लेफ्टिनेंट एलिसले क्या गर्यो, पाइनियर कम्पनीको थियो, यसले लेडर लगाउने कोसिस गर्यो वहाँ लगेर। मान्छेको नाम आइरहेछ, उसले लेडर लगायो वहाँ, क्या सिडी लगायो माथि चढ्नको लागि। एलिस वाज शॉट डेड। अब लेफ्टिनेंट एलिस ट्याङ्कले मारेर मारिदियो उसलाई। And as he placed the पहिला लेडर लगाएकै थियो त्यही मारिदियो उसलाई। On the cover, the advancing infantry was ordered to retreat as the hut caught fire and later were burnt। तो हट में आगो लग गयो और लेडर जो थियो उसको पनि जली गयो। अहिले भिडियो गर्न भन्थ्यो, बुझ्यो कुरा तपाईँले क्या भयो, लडाइँको सिन क्या भइरहेको छ भनेर सबले बुझ्यो लडाइँको सिनलाई। The battle scene changed due to British dragons were caught unaware in the trap and Gorkha jumped over them from the Machan, inflicting heavy casualty with their kukris। It was about 10 AM now the officers of the 53rd in the forest were looking in vain at their watches, waiting for the signal shot। They were unaware that the signal had already been given at AM। अब जो बसिरहेको थियो बिचरा रिजर्भमा बसेको थियो उसले इन्तजार गरेको थियो कि सिग्नल सर्ट होला भनेर, ऊ त सिग्नल सर्ट आइसकेको थियो। अब उसले क्या गर्नु भयो उनीहरूलाई। They were unaware that the signal had already been given at 8 AM। At 10:30 AM, 3 tired companies of 53rd finally arrived from Saharanpur। अब 3 कंपनी आज भागी सहारनपुर आए, 3टा कंपनी टायर्ड को थाकेको हुनु सहारनपुर। So he is received by fuming Gillespie। Gillespie झन् आले बरु माथि राणी सक्छ भल्लाएछ भन्छ, म यहाँ मरिरहेको छु। ओ सहारनपुर भन्छ भागी आएछ, इन्फेन्ट्रीवालाहरू थाकेर जिलिस्पीमा चढिरहेछ। जल जिलिस्पी
who put them to work immediately. जल्दी लड़ाई लड़ो, भाग जल्दी जा भन्यो जर्नलले। कुरा बुझ्नु सिन लडाइँको सिन कस्तो भयो होला। सानो टुटो आएछ चिन्ता कम्ने मरि भेटेर अहिले हाल्ने बित्तिकै जिलिपी कालिदिरहेछ चट बजी लडाइँ जा भन्दा छ। The two horse drawn 6-pounder were placed into position. दुईटा Thank you. The two horse drawn 6-pounder were placed into position. दुईटा 6-pounder place गरिदिनु अब पाउन्डर गनलाई अब हानु भन्दै जरुलाई गोर्खाले हानु भन्छ। The British were desperately looking for an opening. अब ब्रिटिसले खोजिरहेको बाटो खोजिरहेको कताडी घुस्ने भित्र घुस्ने भनेको बहुत desperate भएका छन्। One of Ludo's dragon mentioned that there was an open wicket. Wicket को मतलब क्रिकेट को विकेट हो ना, विकेट मतलब गेट जस्तो हुन्छ क्या। विकेट भन्छ गेट बोल्दै उस टाइममा विकेट कहाँ भन्छ ठाडी घुस्ने बाटो के। One of Ludo's dragon mentioned that there was an open wicket to the northwest side of the fort. Northwest of west fort को सानो अलिकति जगह चाहिँ भित्र घुस्नको लागि। Gillespie and Ludo moved there. Gillespie and Ludo moved their three companies, later realizing that Balbhadra deliberately left the gate open. Balbhadraले खोले छोडेर गएको थियो to lure the enemy into the killing ground. अलिकति खोलेर राखेर आइज बाबु त यही बाटो मार्छु तल भन्छ। यो बलभद्रले प्लान बनाएको थियो। और हिँडेर क्या चाहिँ बाटो छोडेर जाने बाटो छोडेर firing erupted from a cannon hidden at the wicket covered with locks and stone. Cannon the wicket थियो जो गेट पछाडि क्यान्डल लगाएर राखेको थियो ब्याम्बू एन्ड लकडीले ढाकिकन वाइड फायरिङ सुरु भयो। Lieutenant Kennedy brought a 6-pounder within 30 yards of the fort and fired at the wicket cannon. Wicket cannon को फायर गरेर 30 कति दूर लगायो 30 गजमा लगायो उसले। कसले लगायो? लेफ्टिनेन्ट केनेडीले फायर गरेर to destroy it, assuming the jaw has been double समझियो कि ला मैंने उड़ाई दिया विकेट पर उड़ाई दिया कैनन उड़ाई दिया उसे समझियो ले लेफ्टिनेंट कहले केनेडी ले गिरो गयो ती माथि हाँ माथि लिएर गयो 30 यार्ड पर हाने उसलाई हान्नको बाद केनेडी समझियो कि मैले हान्दा मार्दियो भनेर उले समझियो। Ludo on order of Gillespie led the 53rd to storm the wicket. अब उनले भनेको भाजा भने जिलिप्सी जा भने उसलाई 53rd भने मतलब त्यो गेटमा भित्र पनि भनेको। Suddenly the cannon came alive once again. अब दोबारा क्याननले फायर सुरु गर्यो। त्यो हिडन क्यानन त केवल क्या रहेछ एक भाला रहेछ। Once again firing a grape shot. Grape shot को मतलब हुन्छ क्या हो grape shot को मतलब अंगुरको दाना जस्तो के छर छर पड्यो क्या छर आउने त्यसले हाल्यो उसले ग्रेप फायर ग्रेप साइड which immediately killed 7 of Ludo's men and injured many. 7वटा मात्रै टाङ्गे मार्दियो। गोर्खा वर also attacking from the fort parapet. Parapet माथि बसेर फर्स्ट अट्याक गर्न थियो उनीहरूले गोर्खालीहरूले। Even women and children were hurling boulders. अब डेस्परेट सिचुएसन आइरहेको छ लडाइँको। अब क्या गर्यो भने ल बाबु आउनु अब लड्ने हो भन्नु। हामीले भन्छ कि अभिमन्युले चक्कले पहिया उठाएर हानेर मार्यो भनेर द्याट इज द लास्ट स्टेज हो लडाइँको। जब देखेको मसँग केही पनि छैन अब क्या गर्ने अब उसले चल साला निकालेर भनेर उसले हान्न सुरु गर्यो। त सुरुमा त पहियाले लडाएको होइन नि त पहिले पक्का लडाइँ लडेको हो। या तिमीले बाहुबली पिक्चर देखेको थियौ सर कसैले बाहुबली देख्यो कसैले बाहुबलीमा आखिरमा त्यसले त्यो शेरको पक्रेर हान्छ नि उसलाई। त्यो लास्ट रिजोर्ट हो लडाइँको लास्ट रिजोर्ट हो। त्यो लडाइँको सुरुवात होइन भन्ने मतलब मेरो हो। हामीले क्या भन्छ ढुङ्गाले मारे खुकुरीले मारे पानी मारे भन्छ नै त्यो लास्ट रिजोर्ट हमसे केही साधन छैन अब क्या गर्ने अब हामीले त्यो बेलामा यसले भने बलमा भने ल बाबु अब भयो अब लड्ने हो भनेर अब मर्ने पनि मार्ने पनि हो भनेर क्या भयो त्यो ख्याल राम्रो हमेसा हामीले अपना डिमिन गर्छ हमेसा। त्यो लास्ट रिजोर्ट हो लडाइँको आखिरी समय। जस्तो बाहुबलीमा आखिरमा क्या गरेर लड्न हार्न लाग्यो उसले उठाएर साल
शेर को मोकला, गए शेर सुर में थोड़ी शेर को मोकले लड़े हो, शेर तो कर लड़ाई लड़ी, अभी मंदिर भाई कर लड़ाई लड़ा रहा सुर में, बाद में उठाया उसने चक तेज जो टाइम हो इस लड़ाई को बनने मतलब मेरे ये हो गया। Hurling boulders, even women and children were hurling boulders. बच्चा और बाइना ने ढोंगा फाड़ना जा मार्च बनता है। लूडो वॉज वुंडेड इन द थाई, अब लेफ्ट में लूडो कहाँ पे उसको खुट्टा में चोट लागे। एंड एज द ब्रिटिश ट्रूप बम्बर्ड, a few Gurkhas climbed down from their fort, grabbed hold of Kennedy's 6-pounder and triumphantly cut off the spawn shaft. गुरखाली क्या कहा लूडो भाई को घायल भाई को अब बोले माथे जम मारे पैरापेटे माथे जम मारे तालो और तालो मारे उन्होंने क्या काला पकड़े 6-pounder गन लाई पकड़े और कट ऑफ इट्स स्पॉन स्टाफ के था ना उसको स्पॉन स्टाफ ना कट ऑफ कर दो। स्पॉन स्टाफ क्या उनसे नहीं पहले ज़माने में गन को बैरल या गन जहाँ लोग गन पाउडर हालते हैं तेरा ठंडा करना पड़ता है पानी ले, न तो गन पाउडर हाल तो आग लग जाएगा, उन्हें चीज़ों करना पड़ती है। तो तेरा बनते स्पॉन्ज स्टाफ ड्यूटी के क्या काम थे एटा स्पॉन्ज लेकर पानी से ठंडा कर देला। गुरखाल के इसलिए मार पहला बने सरल न रहे कि बात न बजी की बात रही तो सबसे पहला कालो मारे तो स्पॉन्ज स्टाफ न मारे जो एम्प्लॉय थे जो बैरला ठंडा कर रहा थे। क्या बनना चाहिए Gurkhas climbed down their fort, grabbed hold of Kennedy's 6-pounder and triumphantly cut off the spawn shaft. Spawn shaft ना काट दिया। Kennedy's cannon was now crippled. अब Kennedy क्या कर सकते ठंडा करने के पीछे ना पकड़ कर मचा मार दिया बार एक ही मचा गिनती हुई लड़ाई के दौरान। Gillespie at this point wanted to withdraw his troops. अब Gillespie से लड़ाई विड्रॉ करो बन रहा अब इसलिए समय आया था पूरी जो जिलेप्सी ने विड्रॉ करने प्लान बनाया प्रोग्राम बनाया जिलेप्सी ने। जिलेप्सी एट दिस पॉइंट वांटेड टू विड्रॉ हिज ट्रूप्स बट लूडो को थे जो उसके एक ऑफिसर थे सजेस्टेड दैट दे ट्राई टेकिंग द विकेट कैनन फ्रॉम द अदर साइड। अब लूडो ने जिलेप्सीले भने कि सर रुको विड्रॉ करने क्या पछाडि जाने अब मरे मारि नहीं भन्नु उसले अर्को तर्फबाट विकेटलाई क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्यो। बाई दिस टाइम 2 Carpenter's column had also arrived। अब इस समय पर दुईटा जो आथे कलम आथे वो पनि आएको माथि आएको टुर पनि पुग्छ। सो जिलेप्सी एग्रीड विथ लूडो यसलाई देखेको मान्छे आएकै छ भने लूडो भने अब ठिक छ लूडो ठिकै भन्दा किन विड्रॉ गर्ने लडौँ भने उसले डिसाइड गर्यो विथ agreed with Ludo and gave his go order. But the troops were hesitant. Only 4 soldiers accompanied Ludo to the wicket. 4 बाकी सब हमें जानना पड़ता ब्रिटिश आर्मी जो थी इसलिए हमें सोल्जर जानना पड़े केवल 4टा मान्छेले लुडो नाम हामी जान्छौँ हामी शान्त गर्छौँ क्या जानना कहीं वहाँ गएर विकेटमा कहीं गएर wicket one shot more for the honor of Down 24 October 1814। ये एक शब्द सही हो उसमें ब्लॉक बोल्ड लेटर में विकेट चालाक विकेट मतलब कनिंग होती तो कनिंग शैतान विकेट पे खेल। 1 shot more for the honor of Down 24 October 1814। General Robert Rollo Gillespie was furious, both orders here। The 53rd was reluctant to follow his orders। 53rd ने order follow करा थे उस समय पर लड़ाई के दौरान में डरा ऐसे बेचारा हूँ। That was when Gillespie rushed forward to the wicket, brandishing his sword। उन्हें अपना तलवार ले sword branding से जो मंदिर ना विकेट में गई तो हाँ हमला अपना हथियार रखे करते Gillespie वहाँ गए तलवार लेकर रिसली। That was Gillespie's rush towards the wicket, brandishing sword and honor the family home। अपने घर को इज्जत को लायक honor of his family home। Island on his lips, one अपने घर ला याद करना अपने
आइलैंड याद कर लड्छु भन्न गएको तलवार लिएर गएको one shot more for the honor of down एक और गोला डाउन को honor को लागि फायर गोला गरेर hit straight on his chest by the fire of musket ball जिलिप्सी fell down dead यही समय पर जिलिप्सी तलवार ले गया फिर त्यहाँ डोंगे वाला पत्ते खसाल से सामने लेफ्टिनेंट एच होरा who ran after him also lost his life होरा भागेर गए लेफ्टिनेंट होरा गए भागेर ओ होरा अपने जनरल लोग गिरे होने का देखने लगा वो भी मरे हुए lost his life while Captain Bayer was wounded Captain Bayer wounded by him ये सर इस दिन को लड़ाई में 24 तारीख को लड़ाई it was just after 11 a.m. and Captain Campbell in nearby Asthal village झंडा लगा सब गाँव चल unaware that his Major General had just died was still waiting for the 10 a.m. signals वो इंतजार कर रहे थे Campbell eventually sensing that something was missed he arrived at the battlefield but it was too late 23 hours later bodies were carried away from the gate of the Gorkha fort 24 घंटा के बाद में 32 घंटा बाद में डेड बॉडी ले गए Gorkha fort के गेट पे थी the Gorkhas noted that escorted by British officer Gorkhas ने देखियो अपने राजा को दर्शन देखा उन्होंने क्या देखियो उन्होंने Gorkha noticed that escorted by 4 British officers, 4 British officers ने कसीले साथ लाई जाते arrived an European lady, एक European lady आई वहाँ डेड बॉडी लेने में लावा एक European lady है Gorkha जो देखो 4 officers ने escort कर रहा था तो हमने लेडी लग कहीं पे नहीं from the distance बहुत दूर देखे she was Gillespie's younger sister who had lost her husband along with her brother in battles. ये जिलिप्सी को सानो बहनी थी चले अपने दाजीला में यहाँ गवाई और अपने हस्बैंड ने यहाँ गवाई 23 घंटा के बाद में घोड़ा में बचर आई वो एंड कालो ड्रेस पहना थी वो गोरखा ने देखियो और देखा को तो त्यो लेडी रहेछ दिस इज द हिस्ट्री The Gorkhas noted that escorted by 4 British officers arrived an European lady in black horse, कालो घोड़ा में से आई वो, who looked closely at the fort with a telescope. एक telescope ने fort को देखे हुए. From a distance, she was Gillespie's younger sister, who had lost her husband along with her brother in battlefield. भाई पे नहीं मरे और लोग नहीं मरे. Now next. Mauvais withdrew the entire army from the Khalanga hill in their garrison to Dhumbwala. Dhumbwala कहाँ से मतलब था चुने? And Ambala. Ambala में Dhumbwala में build up कर दिए. कले जनरल Mauvais ले. About 150 kilometers away 150 kilometers दूर से Dhumbwala and Ambala. Ambala में था. Meanwhile, it was time to tend to the dead. यो समय से जल्दी मारे ऐसा पुलर ठीक ठाक कर लो गार्ड वुर्ड काम से Of the European, 5 officers had been killed and 18 wounded. 30 native officers were killed and 310 wounded. You know, British Gillespie's body was encased in preservative spirit for the journey back to Meerut. Gillespie को body ले क्या करे? हल्दा इसमें डाल दे प्रिजर्वेटिव को लगे न छोड़ो बनेगा where he was ceremoniously buried at the cemetery at St. John's Church. ये St. John's Church में देखा है ना शेरपा जी देखे रहा था वाला हजुरहरु म्यारेटमा जानु भयो भने त्यहाँनेरि क्यान्टिनमा पाउनुहुन्छ. The Gorkhas had reason to feel good as news came in the Sardar Bhakte. Sardar Bhakte के पास जो न्यूज़ गयो भक्ते थापा. The Gorkhas had reason to feel good as news came in of Sardar Bhakti Thapa's victory at the Battle of Tijur in Solam. यहाँ पर साथ में Tijur सरमोन में बनी भक्ति थापा ने जीती लड़ाई. Balbhadra had commanded well, but everyone knew it was temporary lull
as bigger fights were expected on the British who would return. यो लडाइँलाई सबले खुसी भयो, लेकिन बोला खुसी न बाबु अर्को लडाइँ आने वाला छ, तयारी भएर बसो भन्नु भयो। यो मान्नेवाला छैन अङ्ग्रेजहरू। थर्ड assault 25th November 1814, 26 मैले मनाउँदैछु, 26 को कुराहरू। The spotlight was now on Lieutenant Colonel Seabrod Mauve, who had succeed at his failed task in Khalanga. Who had to succeed? Sorry. The spotlight was now on Lieutenant Colonel Mauve, who had to succeed at this failed task at Khalanga. क्योंकि खलंगा में लड़ाई फेल भयो, इसलिए जीतने को लागे कला नियुक्त करियो Lieutenant Colonel Mauve लाई। Mauve had been serving in the 53rd since 1804 and was considered a brave and fine gentleman. The fall of Gillespie, who was to have commanded the entire Western campaign, बोले पूरा वेस्टर्न कैंपेन ले कमांड करने से जिलेस्पी ले, वो तो मरी गयो। And subdued Gorkha commander Amar Singh Thapa was commendable achievement for the Gorkhas and great setback for the British. जो गोरखा को बहुत ठुलो बात थियो किनकि जिलेस्पी वाज साइन कि नॉट कंप्लीट वेस्टर्न सेक्टरले जित्न थियो और अमर सिंह थापाले हरान थियो, त्यो हराउन पाइन होला और गोरखाले बडा खुजबे सारा मरे घटना। The Gorkha had shown great valor and ingenuity, bravery but ingenuity. Despite their primitive methods against the advanced British artillery, हमारे पास बहुत पुराना हथियार थियो, उसके पास बॉर्डर हथियार थे, इसको बावजूद मैंने गोरखाली वाले अपने इंजीनियरिटी मतलब अपना दिमाग ले अपना जो जुगाड़ भर्नु पड़े बोले कति राम्रो काम गरेको यो भन्न चाहिरहेको छ। Khalanga was very important for the entire Western campaign against Nepal, and the Gorkhas were under order not to yield at all. नेपाल ले आदेश दिया था कि बोले छोड़ दे ना खलंगा ले ये वहाँ नहीं। This was the order given to Balbhadra Lai because it was very important for them. The Gorkhas received reinforcement from Sirmaur and troops led by Subba Chandra Bir Thapa, Kaji Jassu Thapa, and Subedar Chamu Basnet. ये तीन तरह भी वहाँ Sirmaur में लिखा है. Other reinforcement led by Kaji Ranodip Simha could not reach Nalapani because of the British siege, and they camped near Sarangaon. Sarangaon कहाँ से साझा है? यो यहाँ रुकेगा, बाकी सब आए हैं. Despite all the odds and comparatively having old technology weapon system with reduced manpower, Gorkhas fought par excellence defensive war with grit and guts. In Calcutta, Hastings pored over his map, making the progress of the 4 columns. अब Hastings ने Calcutta में मैप लगाया तो बोलते अपने 4 कॉलम कहाँ का भी रेड मैप है, उन्हें अपने कैलकुलेट करने बच रहा है। ये गवर्नर जनरल थे वहाँ को, ब्रिटिश को। Major General Bennett Barney had been slow progress at Bhairwa. Major Barney Bhairwa में slow vehicle. Nepalese forces flashed in and out of the forest. तो जंगल में बाहर निकले मारे उन्होंने Bhairwa में, giving them a trying time. बहुत थकाए इन्होंने। Major General John Sullivan Wood had just about entered Butwal at the end of November. At November end वगैरह Butwal में enter करने पर कले Major General Sullivan Wood. Back west at Nahan, Sirmaur, Major General Martindale was struggling with inaccurate maps, pursuing pioneers to widen the roads to enable passage of artillery to bombard the Jatak fort. ये 4 जनरल को बारे में बताए थे, नाम बताए थे, को बोले कहाँ कर लड़ा थे। इसको अलावा दार्जिलिंग में जनरल पांडे was deployed there, लेकिन दार्जिलिंग अलावा अटैक नहीं था। ये 5 जनरल ऐसे डिप्लॉयड थे लोग, और हेस्टिंग कहाँ थे? कलकत्ता से। Mauve waited for 3 weeks. Mauve ने टाइम लगाया, 3 हफ्ते का इंतजार कर लिया। Was finally over and the batting equipment arrived in Dehradun. लड़ाई लड़ने वाला हथियार जो था देहरादून आ चुके। They now had 4 18-pounders and 2 8-inch mortars. The troops were increased with more infantry battalions from Meerut.
25 November, Mauvais was busy arranging his officers. The force was divided into 4 columns, along with the reserve at extended by attack from the north, south, west and east. अब चारों तरफ अटैक करने उसके बाद खलंगा वाली नॉर्थ वर्जिन करने हो, वेस्ट वर्जिन करने हो, ईस्ट वर्जिन करने हो और साउथ वर्जिन करने हो. Officers leading the forces were Captain John Fast, John Campbell and Major Kelly. Captain Ludo was to move with troops to Khalanga. Major Baldwin to lead from the right, where the water stream began. Captain Bucks from Lakhand and Captain Coltran, Astal village. ये अलग अलग जगह में काम के कहाँ कर रहे हैं. Captain Campbell Smith moved the gun closer to the forces. Captain Parker and the 53rd proceeded as advance guard towards the eastern side of the fort. By 4 p.m. they were at 250 yards away from fort. As evening fell, Smith worked through the night arrangement the howitzers and 2 12-pounder. By the morning of 26 November, 4 18-pounders were also dragged up the hill and firing began at midnight. Tons of 18-pound shell were fired from the next 24 hours on Khalanga Fort. At about 1 p.m., Mauvais saw that they had breached the fortress as rudimentary kamjor piece of engineering marble by the Gorkhas. The mud walls filled with stones and structured with bamboo sticks had held strong against the pounders. Grenadiers were ordered to advance with bayonets and shoot the Gorkhas off the wall or the breach. Major Ingleby, landing this party, was wounded and replaced by Captain Parker. As Parker led the team into the breach, he was horrified to see that it dropped 5 feet deep into the ground onto sharpened bamboo sticks, booby trap. वो गया थे वहाँ में फंसे 5 ताला हमारे से बोला आज में बम्बू को बनाया कि booby trap वो फंसे हो. Ready to impale anyone who dropped. कोई भी गिरे वो बोला बेहोश कर दीजिए. Hidden Gorkhas began shooting at anywhere who entered the opening. Parker rushed back to warn others. It's useless, we cannot get it. As Lieutenant Helston, with his downtrodden, encouraged the men to enter. He was shot down. While the pioneers rushed to place ladders on the wall, Gorkha archers rained arrows with gunners, shot bullets, and the others hurled stones. As flying arrows struck down Campbell, who finally succumbed to his injuries, greatly mauled by the fellow officers. Balbhadra and the brave Gorkhas had won this round. Your ordnance जीती गई. The attack on 24 November was a disaster for the Britishers. Major Ingleby was injured. Harrison, Campbell, and Ludo died. तीन में एक इंजर हुए, वो मरे. Harsigan, Campbell, and Lumford had died. 36 soldiers were dead and 431 injured. 700 rounds of the 18-pounder had been fired on the Khalanga fort. A total of 750 men had died since the operation began in November. Maoist forces were able to breach the wall but retrievable as the Gorkhas opened fire. 25 लड़ाई खत्म हुआ. अब आया 27 नवंबर. Cutting of the water supply. The 26 November, final kill. The desperate Mauvais sent his scout to find and block the Gorkha water source located south of the fort. फोर्ट को साउथ में हमने कहा भन्छौँ, फोर्ट को ईस्ट में भन्छौँ बोले. जो सागर साहब को माथि भन्छौँ बोले. त्यहाँ होइन. फोर्ट को साउथ में तर जहाँ नाला पानी को स्रोत छ. जहाँ नाला पानी का पानी में पिछु गएर त्यो स्रोत को भन्दा माथिको जग्गामा त्यो जग्गामा पानी उसले क्या भन्दा छ, साउथ अफ द फोर्ट एन्ड इन्फर्मर लेड देम टु द अन्डरग्राउन्ड स्ट्रिम. अन्डरग्राउन्ड स्ट्रिम थियो यो. भित्र पानी आइरहेछ, त्यो मुखमा पानी खुल्छ और फिर अन्डरग्राउन्ड जान्छ. त थाहै पाउँदैन कहाँ चाहिँ पानी हुन्छ. बुझ्नुभयो कुरा. कहिले कहिले देखाउनु खाएको हुन्छ. जस्तो सँगले जान्छ बगेर रायपुर पास आएर त कहाँ जान्छ हो त्यस्तै. त त्यहाँ होइन जहाँ तपाईँले भन्छ यहाँ हो भने त्यहाँ होइन.
A column of it, including sappers, a column of British troops, including sappers, regied themselves near the water spring, putting up a picket, vanguard or road blocking activities. Soon they were able to plug the water spring. The water spring बंद कर देना. The loss of precious water reserved for the Gorkhas would be a major disaster. Around noon, Balbhadra Kaur, along with Gorkha officer Sipu Mandan Thapa, Chandrabir Thapa, Daljit Kanwar and Dayaram Khadka discussed how to tackle this situation. अभी 4 जन मिले डिस्कस करें. The fort was totally surrounded and the enemy had cut off their water supply. The Gorkhas went about making fresh shelters with whatever they could find, including earth and debris, and returned to the fighting. Baba, Bada Kaji, 3 minutes लगा जहाँ से बोल बहुत तो पहले था जा. ये इतिहास सबसे टेस्टी हुई है. I'm sorry, हम लोग दिन रात लगाए थे. Umar Singh Thapa instruction had been not to give up their position, and Balbhadra and the Gorkhas showed themselves grit and fortitude as their time ran out. Balbhadra भले तक छोड़ दो वही ना बाबू भले उसको नाना बाजी ले ते ऊपर हाँ. Despite losing 3 cannons, the Gorkhas 3 cannons खत्म हुए हम लोग faced the continuous bombardment of 2 days and 3 nights till northern side of the fort was reduced to rubble. Gorkha officer Subhadar Chandrabir Thapa, Subba Chandrabir Thapa, Subba Nathu Majhi, Subhadar Daljit Kanwar and Jamadar Daljit Sahi of the Mishya Khalanga company, raised in 1805, now disbanded, succumbed to their injury. इसलिए बनता मरेगी बेचारा इस पलटन को जो आज disband बात है 18 बात है बात है. While on the British side, 8 officers and about 400 British troops were killed on this highly intense crossfire. On October 24 November, the British, realizing that Gorkha had only guns and no cannons, began firing more intensely and the cannons killing and wounding more Gorkhas. The inmates had no water at all and the situation was miserable. There was thirst, bloodshed, constant firing, death and no hope. At midnight, Balbhadra tried to keep morale high as he and his officers took a pledge with 84 soldiers to face whatever happened and die with their swords. रात में अपने जैसे 84 में चले कसम खिलाए ले आओ भाई कसम खाओ बंदो. Die with their swords in their hands. However, with chances of reinforcements coming in being slim, some battalions felt it was better to leave the battleground and move elsewhere. Na militia Khalanga, Mughlis militia Kala. Midnight, a company which had been defending the eastern side at Dhulkot left at midnight for Doon with their guns and columns against Balbhadra's order. यो मिलकर छोड़ दी इसलिए 1805 जो रेज बात है इला डिसबैंड करे 1800 इस बाद में डिसबैंड करेगा. Only about 50 or 60 Gorkha, including junior officers like Jamadar, Hudda and soldiers, stayed on the Balbhadra, intending to die with their sword in hand. Kaya, Bhanda, Mardu, Ramro, the deserter companies were later disbanded in the past. अरे पढ़ लिया भाई से ठाके में कर ले एक भी पेज छवा मैं पढ़ दीजिए थोड़े ही याद है ना एक दो ये छः चार पे तो छः तो मैं जल्दी पढ़. Balbhadra returned 13 dead bodies of the British side on their demand. The Gorkhas now had been withdrawn a drop of water for 48 hours. There were children, women injured, thirsty for water. Amid the constant bombardment, the fort had been by now pummeled to almost nothing. At around 2 a.m. on the midnight November 30, a band of Gorkhas made an attempt to at about 2 a.m. रात में 30 नवंबर में Gorkhas made an attempt to attack the British guarding their water source. Water source full of life 30 नवंबर में 2 बजे. Buck, who was guarding, Captain Buck was guarding the site,
that side. His troops fired them and the Gurkha had to return. After half an hour, a larger group of Gurkhas made another attempt. Buck again ordered fire to them. This was around 3 am at night. Some of the Gurkhas died, some were injured, some were captured, and about 70 of them got away. The Gurkhas by now had realized that it was over to them. They had the will to fight, but were incapacitated. It was time for those alive to get out of and live for fight the enemy other day. The harder decision has to be taken behind the dead, injured and dying. Balbhadra, the brilliant, courageous young commander, was persuaded to leave much against his will and to move to Jasak, where together with Kazi Ranjit Singh Thapa, he could give another shot of defeating enemy. Subba Ripu Mandra Thapa, Subedar Chamu Basted, Subedar Gaja Simha Thapa, Jamadar Vijay Simha Khatri, Jamadar Samindra Khatri, and Jamadar Chandra Bahadur Rana, and led by Captain Balbhadra, out of the fort of the village called Dubra, where they stayed overnight. It is believed that as he rode away, Balbhadra shouted to the British troops that he was leaving the fort of his own and would be back to fight them again. यो से लड़ाई को पूरा कहानी बाकी तो उन कहानियों से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट छैन, लेकिन मैं यति भन्न चाहन्छु कि यो सब बातमा जो छ टाइम भयो बाद में देखो कभी यो रिसर्च वर्क गर्नमा मसँग साथ इस रिसर्च वर्क गरेको हो। मैले जस्तो बताएँ मिसेस ज्योति मणि थापा धर्मशालाको हुनुहुन्छ नि, म लेफ्टिनेन्ट भूपेन्द्र छेत्री मैले मिलाएको, एन्ड हाम्रो मिस्टर पीएन शेर्पाजी सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, उहाँले मिलेर रिसर्च वर्क गरेको हो। यसमा गल्ती हुनसक्छ, बहुत कुछ हुनसक्छ, त्यसको लागि हजुरहरूले जो पनि प्रयास गर्न चाहन्छ गर्नुहोस्। अनि दुई कुरा छ, अब यो त भइगयो यहाँको कुरा। अब जो मैंने तपाईँले बताया जब तक ये ऑथेंटिकेटेड कर देना, डॉक्यूमेंटेड कर देना, तब इसको कोई वैल्यू चाहिए। ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने क्या चाहिए, आगे की कार्रवाई दुई मिनट बाद समझो। सुरक्षा को लागि गवर्नमेंट एजेंसीले हैंडओवर करने को रणनीति बनाना पड़ता है। जब तक हमने गवर्नमेंट एजेंसी हैंडओवर करने खालका फुटला तबसम्म उसको सुरक्षा हुन्छ। कसलाई हैंडओवर करने हो, सांस्कृतिक विभागलाई करने हो, उसमें पैसा हुन्न। आर्कियोलॉजी विभागलाई करने हो, उसमें पैसा हुन्न। फरेस्ट डिपार्टमेंट दिन्छ, उसमें पैसा हुन्न। एमओडी मिनिस्टर डिफेन्सले गर्यो भने उसले बहुत ज्यादा प्रतिबन्ध लगान्छ। 1% लेफ्ट इज टुरिज्म विभाग छ, उसको पैसा हुन्छ। अब त्यो टुरिज्म विभाग उत्तराखण्डको हुन्छ, टुरिज्म विभाग सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हुन्छ। लेखन कार्य जो छ यो हिन्दी भाषामा होला, इङ्ग्लिस भाषामा, नेपाली भाषामा होला। क्या लेखन कार्य, क्या इसले ग्रेनाइट को पत्थर में लिखनी हो, स्टील को शीट पर लिखनी हो, एल्यूमिनियम शीट में लिखनी हो, कॉपर शीट में लिखनी हो, या पेपर में लिखनी हो। यो सभी काम सलाह मशवरा के बाद श्री पीएन शेर्पा जीवले करना। पूरा कार्य और खर्चा को व्यवस्था पनि भी श्री शेर्पा पीएन जीको जिम्मा छ। समाजले सहायता प्रदान गर्न चाहन्छ सक्दैन नि, शेर्पाजीले भन्छ यो टास्क म लिन चाहन्छु। यिनले दुई शब्द भन्न चाहे यहाँबाट त्यति हो। मैले कम्प्लिट त गरेको छैन, दोबारा मौका पाएँ दोबारा बात गरौँ। अहिले यति बात गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।